डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube. डेंसिटी ऑफ वुड या सॉलिड ले लो 700 kg per meter cube. ऐसा एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक था, इसको ऐसा रख दिया, तो ये कितना नीचे होगा और टोटल के कंपैरिजन में. The question is, if it is placed with excess vertical on a water surface, what part of it will be submerged in water? चाहे तो हाइट के टर्म्स में बता दो, चाहे तो वॉल्यूम. क्या हो गया तुम लोगों को, कोई कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. वॉल्यूम सबमर्ज बाय टोटल वॉल्यूम या हाइट सबमर्ज बाय एक्चुअल हाइट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड. That's it. So density of solid is 700 upon 1000, 0.7. That's your answer. 7 by 10th part. That is 0.7 times the total volume is submerged. अभी भी नहीं समझा? विशिष्टा? Yes, sir. समझा ना लक्ष? Yes, sir. Now, what is the question? Find height of the cylinder above water surface. Given its height is 24 centimeter. Its total height 24 centimeter. What you have to do is you have to find how much height is above the water. Water के ऊपर कितना height है और नीचे कितना है. Total 24 है. What part of the total is submerged? अंदर कितना है? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टर्म्स में कितना है? What fraction of the total is submerged? Prisha. Yes, sir. What fraction is submerged? It's answer of the previous question. You are not able to say. What fraction is submerged? (240/7). No. What fraction is submerged? Fraction you understand, na? 0.7 itself is the answer. See, what fraction of the total is submerged? 7 out of 10 is submerged. That is the answer. Now my question is, what fraction of the total is above water? 3/10. 3/10. And what is the total height? 24. 24. So 3 by 10th of 24 is how much? Say 3/10 of 24 is 7.2. 7.2. That's your answer. Fraction of total above water. Above water is 0.3. Therefore, height of cylinder above water is 24 into 0.3, that is 7.3. That's it. So out of 24 centimeter, 7.2 centimeter is above water. That's it. I don't know, इतना difficult topic क्यों लग रहा है? No, either you people are not revising or not studying at all. कुछ तो एक reason है. श्रेयांश. Yes, sir. ये नई टॉपिक समझ में आ रहा? सर मेरी टेक्स्ट बुक में टॉपिक है नहीं तो मैं पढ़ नहीं सकता. What? It's Yes, not in a textbook. सर एक पेज है सिर्फ, मतलब इतना
डिटेल में सब कुछ नहीं है। Oh, is it? यस सर। तो वीडियोस से रिवाइज कर लो, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। मतलब आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट देयर इन योर बुक। मतलब सीबीएसई में इतना कम वेटेज क्यों? इट्स अ गुड इंटरेस्टिंग टॉपिक। इन अदर बोर्ड्स आई हैव सीन दे हैव रिटन लॉट लॉट। आई हैव नॉट सीन योर एनसीईआरटी बुक। एनीवेज, तो बोलना तो चाहिए था, कुछ करते थे, बोला ही नहीं किसी ने। अभी बता रहे हो इतना है ही नहीं। तो फिर क्या दिया हुआ? सिर्फ बॉयंट फोर्स भी एक्सप्लेन नहीं किया क्या? व्हाट इज इन योर बुक? आर्किमिडीज प्रिंसिपल है दैट्स इट। और रिलेटिव डेंसिटी, बस उसके ऊपर एक पेज है। और ये पूरा चैप्टर ही एक पेज का? ग्रेविटेशन में इंक्लूड कर दिया है सर इसको। ओके ओके, चलो। सो आज कैसे डाउट ना, मतलब डाउट तो पूछो, कम से कम डाउट भी नहीं पूछोगे तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा। चलो एक क्वेश्चन करके बता मैं। क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ ice is 910 gram per liter, yeah, kg per meter cube. Now, considering iceberg to be a unit to be of uniform section, estimate its height if 9 meter of it is above water. Density of ice is 910 kg per meter cube, and that of water, once again, density of water we know is 1000 kg per meter cube, right? Question is, if there's an iceberg, let us assume iceberg to be of uniform section. ऐसा assume कर लेते हैं कि iceberg uniform section है। होता नहीं, iceberg is usually thicker in the lower region, but let us assume कि uniform, बहुत ज्यादा variation नहीं है। So अगर आइस वाटर के ऊपर 9 मीटर है तो टोटल हाइट कितना होगा? दिस इज व्हाट यू हैव टू एस्टिमेट। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन दैट ऑफ वाटर। वाटर का डेंसिटी इज 1000, आइस का डेंसिटी इज 910। नेचुरली आइस विल फ्लोट इन द वाटर, एंड ऑल ऑफ अस हैव सीन, राइट? ऑल ऑफ अस हैव सीन दैट आइस फ्लोट्स इन द वाटर। आइस क्यूब्स अगर आप पानी में डालोगे तो दे फ्लोट। So ice floats in water. So there's an iceberg. Iceberg, all of us have heard, huge ice bodies. So they float on water, right? और ये सबने सुन रखा है, जितना ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा नीचे होता है। तो उस पे ही क्वेश्चन है। 900 kg per meter cube is density of ice. Density of water is 1000 kg per meter cube. If 9 meter is height of the iceberg above the water, you have to estimate its height, total height. सर 19 सेंटीमीटर। No. Okay. 19 मीटर। Okay. 19. 100 meter. 100 meters, correct answer. See, suppose total height is h. So how much of it is submerged? H minus 9. Let us assume total height is h. 9 is above water. So what is, how much of it is underwater? H minus 9.
right? So density, height submerged upon total height. That is fraction of the solid submerged in the liquid is equal to density of solid. Density of solid is 910 upon density of liquid is 1000. So the 0 gets cancelled. 100H minus 900 is equal to 91H. Take it on this side. 9H is equal to 900. That is H is equal to 100 meter. That's it. So total height of the glacier is, iceberg is 100 meter. So 9 meter is above water and 91 meters below water. Hello. Yes, sir. Clear, na? Yes, sir. So बस उतना ही relation है. That's it. Not very difficult. I don't know how come it's not there in book. Maybe शायद कभी junior class में रहा होगा. One second, huh? Okay. So what the part of the iceberg which you see above water is nearly 10% of the total, even lesser than 10%. Actual 90% is, more than 90% is below it, right? Below water. Okay. So let me assume that you have understood this topic. Let me move to next topic. So Archimedes principle we have discussed in the previous class. Actually, different statements are given for Archimedes principle. All nearly mean same. So what statement we have is for Archimedes principle. One second. Seven 30 तक बता. एक बार जर्नी से चेक करना बताओ. So Archimedes principle once again is what? Buoyant force is equal to weight of liquid displaced. Right? Buoyant force is equal to weight of liquid displaced. We have studied this as a principle, formula, derivation. We have seen everything. We have seen. This itself is known as Archimedes principle. Right. Now, what extra we have to discuss here? We already stated this. Then why are writing this again? This we can verify it in lab. I don't know whether this experiment will be conducted in a school or not, but at some stage we have done this. So verifying the Archimedes principle. So how to do that? See, to measure volume, before we verify this, let me take this an additional topic. To measure volume, we use liquid displacement method. One, liquid displacement method. What is that? If you take a measuring cylinder, right? In chemistry lab or in physics lab, you would have seen there is a measuring cylinder, right? There's a thin cylinder and there are graduations. Like here you will see 10 milliliter, 20, 40, 50, 60, something. Okay. Now, if we pour some water, suppose water is somewhere here. So that means what is the volume of the water inside? Volume of the water is 30 milliliter, right? If we pour more liquid,
more water, so level of water rises, right? And here there are markings, reading which you can understand or estimate the volume of the water inside, right? सबने देखा है, घर पे देखा होगा, कभी सिरिंज में देखा होगा, लैब में देखा होगा. हेलो, फिर सब चुप हो गए. अभी ये भी नहीं देखा आपने, मेजरिंग सिलेंडर, एक ऐसा सिलेंडर जैसा है, साइड में रीडिंग्स लिखी होती है, यू पोर वाटर. अरे वो देखा है. राइट. सो ये रीडिंग्स आप निकालते, राइट? नाउ let us assume that you have filled the water up to 50 ml mark. मतलब what is the volume of the water inside? Volume of the water in the measuring cylinder is 50 milliliters. Okay. Now there's an irregular solid. There is irregular solid. Obviously it should go inside, and density of it is should be more than this one. Now I cannot. It's not a regular shape. I can measure its volume using some formula. Then how to do that? So what we do is, we measure the volume of the liquid in the cylinder. Then we drop this solid in this liquid. As the solid sinks, right, level of water rises. Suppose level of water rises to 64 ml. Once it completely sinks in the liquid, volume of the water or level of the water rises to 64 milliliter. What was the initial level? 50 milliliter. What's the new level of water? 64 milliliter. That means the solid is of 14 milliliter. So volume of this solid, which is irregular, which we could not measure using any formula, right? Geometrical formula कोई मिला नहीं, उससे हम निकाल नहीं पाए, तो उसका volume निकला है 14 milliliter. Is it clear? Yes, sir. This is what we say is displacement method, to measure volume of irregular shape. Okay? And this is known as liquid displaced. ये जो volumes है ना, ये liquid displaced है, ठीक है? और ये liquid displaced और solid दोनों का volume same होता है. Volume of solid immersed is same as volume of liquid displaced. This is a well-known fact. Volume of solid immersed in liquid is same as volume of liquid displaced. Okay, समझा? Volume of solid immersed is same as volume of liquid displaced. Is it clear? Okay. Now, how to verify Archimedes principle? So, let us take a solid. Suspend it from a spring balance. There's a spring balance. There's a pointer which reads some weight, right? And this is a solid, right? So, through a spring balance, I have suspended a weight. This spring block shows a reading W1. Yeah. Spring balance shows a reading W1. That means weight of the block when it is suspended in air is W1. Okay. Now do one thing. Place a liquid. Initially this is a liquid cylinder where reading was V1. Now place it inside. New reading is V2. So what is volume displaced? What is volume displaced? Volume of liquid displaced will be what? Say
पहले यहाँ पे V1 वॉल्यूम दिखा रहा था, अभी रीडिंग V2 है, तो कितना हो गया रीडिंग? V2 माइनस V1, राइट? हेलो, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मेजर कर सकते हो आप? कर सकते हो। कैसे? वॉल्यूम पता चल गया मेजरमेंट से, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी, ये हो गया आपका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। आर यू कन्विंस्ड विद दीस टू स्टेप्स और आई शुड एक्सप्लेन अगेन? हेलो Sir, can you explain again? see, there's an experiment where we verify Archimedes principle. What is that? We'll verify that volume of the weight of the liquid displaced is same as the buoyant force. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं उसमें? Let us take a solid, suspend it from a spring balance. एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया, उसको स्प्रिंग बैलेंस से सस्पेंड किया हवा में रख के, राइट? आई फाउंड इट्स वेट टू बी W1. तो W1 क्या है? वेट ऑफ द सॉलिड। कन्विंस? W1 इज वेट ऑफ सॉलिड। ओके, फिर मैंने क्या किया, एक वेसल लिया, उसमें वाटर लेवल इज अप टू V1 मार्क, देन आई प्लेस्ड इट, ऐसा कुछ रखा है इसको कि ये इसमें इमर्ज हो गया, कौन सा? सॉलिड। तो इसका वॉल्यूम ऊपर आ गया, न्यू लेवल इज V2. सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस? पहले V1 मार्क पे था, अभी V2 मार्क पे चले गए। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस? V2 minus V1. V2 minus V1. Now weight of liquid displaced is what? Volume into density into gravity, right? Yes. V2 minus V1 into density of the liquid into gravity, right? Yes, sir. Now ये मिल गया। अब देखो what happens, जैसे आप इसको वाटर में इमर्ज करोगे ना, पॉइंटर ऊपर चला जाता है, पॉइंटर शिफ्ट टू W2, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? बिकॉज अब इस पे बॉयंट फोर्स भी लग रहा है ऊपर के साथ। पहले W1 रीडिंग दिखा रहा था, फिर W2 दिखाएगा, राइट? तो बॉयंट फोर्स क्या होगा? बॉयंट फोर्स इज W1 माइनस W2, ओल्ड रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस माइनस न्यू रीडिंग इन द स्प्रिंग बैलेंस, right? Yes, sir. So W1 minus W2 is buoyant force. So buoyant force पता है, W1 minus W2, volume of liquid displaced पता है, hence weight of liquid displaced पता है, and finally you will verify that this value is same as this value. ये कैलकुलेशन करो आप और ये कैलकुलेशन करो आप, दोनों सेम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? Hence buoyant force you will see is equal to weight of liquid displaced. This is how we verify Archimedes principle in lab. अगर आपको चांस मिलता है तो even you will do it in lab, नहीं मिला तो okay, right? You have to remember it as a theory. Clear? समझा ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे वेरीफाई किया? Yes, sir. We measured volume of the liquid displaced, density of liquid was known, I am assuming that, hence we know the weight of the liquid displaced, वो मिल गया। Then हमने पुराना वेट निकाला हवा में सस्पेंड करके, फिर नया वेट निकाला, उसको वाटर में इमर्स करके, लिक्विड में इमर्स करके, दोनों का डिफरेंस निकाला, द डिफरेंस इज buoyant force. So buoyant force is equal to weight of the liquid displaced. That's the answer. Yeah, आप calculation में check करोगे तो you'll see that it's
the two are same. Buoyant force is same as weight of the liquid space. Is it clear?